Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome everybody. I am Dr. MGT and I am today going to deliver lecture number 21 for the course Advances in Human Resource Development and Management. First of all, let me give you the review of the previous lecture. So in lecture 20 we have discussed what is actually learning. So here we have actually gone through two different definitions of learning. One was given by behaviorist scientists, another was cognitive scientists. So actually behaviorists were believing that learning would occur when there is a relatively permanent change with respect to behavior, and that is actually a result of some experience or interaction with environment. Well, on the other hand, the cognitive scientists believe that learning would also occur if there is relatively permanent change in cognition. So this would also be learning. So by combining the definition or contents of both of the schools of thought, we have come to another definition of learning, that is it's relatively permanent change in cognition. That is as a result of some environmental changes, and that would be directly influencing behavior. So change in cognition that influences behavior, and it's as a result of certain external changes, would be termed as learning. Then we have discussed what is social learning theory. So this theory assumes that learning would also occur irrespective of the behavior of the person. Actually, before before executing certain action or going through certain steps, we actually learn by perceiving information and processing it within our mind. So this social learning theory says that we can learn different things by simply observing others. So whatever we observe and what the outcomes we see for those behavior, we are to actually process all of this information within our mind. Then we would be practicing, then it would be a part of our learning. So social learning theory say that we can also learn by simply observing others. So जो role models हैं उनसे हम जो सीखते हैं, that is because of this social learning theory. Then we have discussed that what is motivation to learn. Motivation to learn is actually, in the previous lecture we have defined what is motivation. So actually motivation gives you direction, consistency and persistence. Direction, your intensity of effort, and your persistence on that effort would be regarded as motivation. Well, what is motivation to learn? So here direction is to learn. So what is left is that this motivation to learn would give you intensity of effort as well as your persistence or consistency of effort in order to learn something. So this was motivation to learn. Here we have discussed certain environmental factors that would be actually going to reduce our motivation to learn and thus creating resistance. So environmental factors में we have discussed peer support, कि जो हमारे peers होते हैं work environment में, उनका जो reaction होता है किसी भी training या किसी भी HRD activity के बारे में, so that affect our motivation to learn. So if peers say that this is not a useful training, I have gone through the training and the same trainer was actually delivering the lecture on that occasion, and it was simply boring and we can learn nothing and we can apply nothing on the job. So if we such sort of peer आप कह लें उसके जो views हैं या उसके opinion, then it would certainly affect our motivation to learn, and simply we won't be interested to learn. And if our supervisor simply send us on the training, we won't be motivated and we would be having any interest in that learning or in that HR intervention. Then regarding environmental factor, we have also discussed the effect of supervisory support. So supervisory support would actually is all in all in order to control on certain rewards or certain punishments. So if he is going to reward training, then obviously
the people employee would be going to on that training, would be going to participate in that training and would be learning and would be going back and apply the learning material on the job. Well, if a supervisor say that it's not useful, you should not be going there, or it's a waste of time, it's a waste of money, then simply people won't be motivated to go on that training, and would not be, if they are sent, then they would not be motivated and they would not certainly learn. And if by chance if they could learn, then back on the job, supervisor would not be allowing these people to apply the learned material on the job. Then we have discussed, under these environmental factors, we have also discussed organizational climate, that if organizational climate allow them to apply certain things, then they would be there would be motivation to learn, that if I learn, then I can apply it on the job. And if environmental जो climate, organizational climate है, वो allow नहीं करती, so simply we won't be interested to learn and apply new things. Then we have discussed certain individual factors and resistance, or resistance in terms of low motivation to learn. So individual factors में हमने discuss किया उसकी cognitive ability और IQ. So IQ would be very much important for the purpose of their learning. So if we cannot design a training, or we cannot send different participants having different level of IQ on the same training, it would cause certain problems. Then we have discussed here anxiety as well as certain other factors. We have discussed it regarding these individual factors. Then we have discussed that how we can design training that motivate adults to learn. So जो क्या लगे टीचिंग है या ट्रेनिंग है, उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं. जो बच्चों को चाइल्ड साइकोलॉजी कुछ और होते हैं, एडल्ट साइकोलॉजी कुछ और है. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पीपल वुड, as it's a general perception that in old age people learn less, or people won't be learning anything in old age. बूढ़े तोतों को सिखाना मुश्किल होता है, छोटे तोते छोटे बच्चों को सिखाना आसान होता है. So how we can actually design training, and that would be actually design certain program that would be training adults. So इसमें adults they are motivated to learn the things that are directly relevant to life or relevant to job. So we are to design such trainings whereby we can say that it's important or it's directly related to your job, it's applied. So applied किस्म की चीज़ें उनको सिखाई जा सकती हैं, और उनके लिए आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग डिज़ाइन करो. उनके लिए जैसे आपने कोई क्लासरूम टाइप की एक्टिविटी रखी, कोई लेक्चर रखा, दे वोंट बी इंटरेस्टेड. जैसे उनको कोई एक्टिविटी देंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग देंगे, हम फ्यूचर लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है. सो हमने उनके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग डिज़ाइन करनी है. एंड सिंपली व्हाट वी कैन डू इन ऑर्डर टू कीप देम इन्वॉल्व, जस्ट हैव देयर पार्टिसिपेशन. तो जो एडल्ट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन जितनी ज़्यादा होगी at the time of identifying training needs, at the time of designing training program, at the time of discussing contents, or deciding about objectives, or how to evaluate the training, or how to evaluate the trainees. So if we have greater participation from these adults, then they would be motivated to learn from these trainings. So this was something about the last lecture. Now we are going to discuss our current lecture, and in this lecture we are going to discuss that here we have discussed various theories of learning. In lecture 20 and in lecture 19 we have discussed various theories of learning. We have discussed various theories of motivation, and we have discussed various theories of performance. Okay? So all these different types of theories we have discussed in order to understand the exact nature or exact needs or concerns of a particular organization, and in order to design our training programs or training intervention that would suit or that would fit to that environment or to that organization. तो ये सारी चीज़ें हमने इसलिए डिस्कस की ये हम डिज़ाइन कर सके. अब ये सिंपल, इट्स नॉट सफिशिएंट दैट वी नो ईच एंड एवरी थ्योरी अबाउट लर्निंग, अबाउट मोटिवेशन, अबाउट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एंड सिंपली वी आर गोइंग टू ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्योरीज वी आर गोइंग टू डिज़ाइन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. फॉर दैट पर्पज वी आर टू have an analysis or audit of the organization, of the job, of the employee. So what is this? How we would be taking
व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, हमने एक थ्योरी तो पढ़ ली, अब जो जहाँ पे अप्लाई करना है, जो सिचुएशन, जो एनवायरनमेंट, हमने उससे भी तो देखना है ना. वी आर टू मेक सिंक्रोनाइज थिंग्स, जो ऐसा कोई फार्मूला बनाना है जिसमें 2+2 4 ना हो, जिसमें 2+2 5 हो जाए. सो इसके लिए हमें एक साइड पे सारी थ्योरीज का इल्म होना, दूसरी साइड पे हमें ऑर्गेनाइजेशन, उस जॉब या उन एम्प्लॉइज या पार्टिसिपेंट्स का नॉलेज होना है. सो हियर वी आर गोइंग टू हियर डिस्कस दैट हाउ वी कैन नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन साइड, अबाउट एम्प्लॉय साइड एंड अबाउट जॉब साइड. सो दिस वुड बी डन बाय गोइंग थ्रू ट्रेनिंग नीड analysis. So here in this lecture we would discuss training need assessment or training need analysis. This is called TNA. Then we would be discussing why to conduct this TNA. Then we have to discuss what is a training or HRD need. ये है क्या need या training need या HRD need क्या है. Then we would discuss TNA model. TNA model would include certain इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स. और इसमें इनपुट्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, टास्क एनालिसिस, और क्या है, इंडिविजुअल एनालिसिस. यहाँ पे हम इस TNA model, we won't be able to completely discuss this TNA model within this lecture, so we have actually divided into 2 lectures. Within this lecture, out of this TNA model, we would be discussing only this organizational analysis, and for this organizational analysis, we would be discussing data sources for organization analysis, and what to ask, and from whom we would be asking these information. We would be discussing these things within this lecture, and rest of the model would be discussed in lecture 21st. Now, starting with this TNA, let me first of all give you the design of HRD process, that what is actually HRD process. We have actually discussed this model in some previous lecture. So this is HRD process actually composed of 4 stages. First is assessment, then we have to design the process, design the training intervention, then we have to implement that training program or training intervention, then at the end we have to evaluate that training program. So here we are concerned with the assessment of HRD process, that how we can have proper understanding about the needs, about the concerns or priority of the organization, as well as what is actually needed by this organization, or what are the strengths or what are the weaknesses of this organization. And on the basis of this analysis, at organization level, at task level, and at person level, we would be identifying needs, and finally we would be prioritizing needs. So first part of this HRD process is assessment. Out of this HRD process, first one is assessment, this one, assessment. Within assessment, it includes 2 things: assessment of needs and the prioritizing of the needs. Rest of the phases, this design, implementation, and evaluation would be discussed in certain future lectures. So for this lecture, we have to discuss how to assess this HRD program. So for this purpose, we are to conduct training need analysis. So needs would be assessed by this process, training need analysis. So before we are going to conduct any TNA process, remember that training is not what is ultimately important. What is important is performance. So ट्रेनिंग हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस परफॉर्मेंस है. ये ना हो कि हम ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करते जाएं और हमारी परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की वो इम्प्रूव ना हो. So we won't be able to get our purpose fulfilled unless we could have achieved the performance enhanced. So training is not the purpose. Purpose is to enhance the performance. So our destination is increased performance. Our route, our way is through training or HRD intervention. So the end is performance, improvement and performance. Well, आपकी जो वे है, जो मीन्स हैं, वो क्या है, ट्रेनिंग. सो आवर फोकस शुड बी ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट ऑन द डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज परफॉर्मेंस, नॉट द ट्रेनिंग प्रोग्राम. नाउ व्हाट इज TNA? Well, it is a systematic process
by which an organization's HRD needs are identified and articulated. हम इस needs को organizations की training needs को identify करते हैं और इनको properly manage करते हैं, articulate करते हैं. Well, here what this needs assessment process can identify. ये TNA जो process है ये क्या कर सकता है? देखिए ये एक systematic process है जिसमें हम various इसकी कह लें कि stages हैं या steps हैं और various इसके levels हैं TNA के. So what a TNA can actually do, it can identify organization's goals and its effectiveness in reaching these goals. कि इनके goals क्या हैं and what is importance for reaching at those goals and how it's important for HRD department to actually lead or support organization in order to reach at those organizational goals. Then this TNA can identify gaps between employee skills and skills required for effective current job performance. तो इसने gap identify करने हैं कि employee के current skills क्या है और जो current jobs कोई performance है वो कौन से skills को require करती है, उस पे कौन से skills चाहिए, current skills of employees और जो jobs हैं current उन पे उनको perform करने के लिए कौन से skills चाहिए, ये TNA ये करेगी. Then it would identify certain gaps between current skills and skills needed to perform the job successfully in future. तो जो future jobs हैं उनको perform करने के लिए कौन से skills चाहिए और हमारे पास current skills कौन से हैं. So this TNA model would also identify those gaps. अब उनको कैसे fill करना है, this is the responsibility of HRD department. Then it would identify, this TNA analysis would identify the employees to be sent on those training sessions. तो इस TNA मॉडल के थ्रू TNA एनालिसिस में हम ये भी देखेंगे कि what are the tasks, what are the skills required to perform current jobs and required to perform certain future jobs. इसमें जो गैप ये आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि कौन से एम्प्लॉइज के पास वो KSAs हैं, skills, knowledge, abilities हैं और कौन से एम्प्लॉइज के पास नहीं है. So on the basis of this person analysis we would be selecting employees or trainings for those training sessions. Then this process would identify the conditions under which this HRD activity would occur. कि हम किस जगह पे करेंगे, कौन करेगा, ठीक है ना, किस मेथड में होगा, ये सारी चीज़ें भी TNA आइडेंटिफाई करेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, कोई क्लास रूम है, कहाँ पे करनी है, क्या कैफेटेरिया में करनी है, क्या मीटिंग रूम में करनी है, क्या बोर्ड रूम में करनी है, कहाँ पे, क्या हमारे पास इंटरनल कोई ऐसा ट्रेनर है जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्रॉस या हमें बाहर से लेने पड़े. सो TNA मॉडल वुड, TNA assessment would also identify the conditions under which this HRD activity would occur. Now this was the definition of TNA. Now we have to discuss why to conduct TNA. What is the need for conducting this TNA? So we can say that organizational effectiveness may be improved without TNA. इसके बगैर भी हो सकता है, but it is not guaranteed. तो ये लाजमी नहीं होगा कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, ठीक है ना. परफॉर्मेंस के लिए इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है कि विदाउट TNA आप कर जाएं, इट्स पॉसिबिलिटी कि आपका आइडिया क्लिक कर जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं है. सो TNA क्या करता है फिर जी, इट इंक्रीजेस. सो हम क्यों करें फिर TNA, इसलिए कि इट इंक्रीजेस द चांसेस द टाइम, मनी एंड एफर्ट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग इज स्पेंट वाइजली. तो जो आप काम कर रहे हैं, जो आप पैसा लगा रहे हैं, जो आप टाइम लगा रहे हैं, जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट, अपने एम्प्लॉयज़ की, दैट इज स्पेंट वाइजली. सो वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी एक्टिविटी दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी. तो हमें ये इंश्योर कर देती कि ये क्या जी रिक्वायर्ड है चीज़. आप TNA को ऐसे समझें कि एक जो पेशेंट है, क्या आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट डायग्नोसिस, क्या आप उसे मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं, या अगर रिकमेंड करते हैं तो उसमें कितने चांसेस होते हैं, इम्प्रूवमेंट के कितने चांसेस होते हैं, ठीक है ना. तो जैसे कह लें कि आपकी हेल्थ के लिए डायग्नोसिस लाजमी है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के लिए भी ये डायग्नोसिस लाजमी है. दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग नीड.
असेसमेंट और ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। तो TNA इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चल जाए कि व्हाट इज़ नीडेड, और फिर हम उसकी रेमेडी ऑन द बेसिस ऑफ द आइडेंटिफाइड सर्कमस्टांसेस आर सिम्टम्स वी एक्चुअली रिकमेंड द रेमेडी। तो TNA क्या करता है, इट इंक्रीजेज द चांस दैट टाइम, मनी एंड एफर्ट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग इट्स स्पेंट वाइजली। वेल TNA would determine the benchmark for evaluation of training। और जब हम फिर एट द एंड हमने ट्रेनिंग को वैल्यूएट भी करना है, तो उसमें हमें पता चल जाए कि हमारा कौन सा बेंचमार्क होगा, ठीक है ना, किस लेवल तक हमने परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशनल कह लें कि सारे स्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट में हमें किस लेवल तक परफॉर्मेंस एनहांस करनी है। अगर हम TQM अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें कितनी कह लें कि रिजेक्शन रेट कितना एक्सेप्टेबल है। अगर हम कोई नया सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, कोई नया डाटाबेस लेके आते हैं, कोई नई लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है ना, वो हम उसकी उस नई लैंग्वेज में हम नए प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो हमारी क्या बेंचमार्क्स क्या हैं, how or at what level our employees would be performing, and at what level our organization would be delivering these products. Then this TNA increases the motivation of participants, because you have actually taken the feedback from participants, so it enhances their motivation to participate. Then this TNA would align training activities with strategic objectives, because here you would be going to assess organizational objectives, strategies, mission, goals उसके assess करने हैं. So certainly it would going to align training activities with certain strategic objectives of the organization. Then why TNA is not conducted? हम कहते हैं कि ये तो TNA है, ये इसकी reasons हैं, ये इसके benefits हैं, लेकिन still we see that TNA is not practiced. Usually organizations don't go for TNA. So what are the reasons? It might be that it's difficult to conduct a TNA and it's time consuming process. तो लोगों को ट्रेनिंग नहीं आती, तो TNA आना उससे ज़्यादा मुश्किल है. सो लोगों को चूँकि TNA आता नहीं, इसलिए वो करते भी नहीं है. Well, certain managers may say that action is valued over research. वो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है कि हम रिसर्च करते रहते हैं, अपना एक्टिविटी शुरू करते हैं, ठीक है ना, और फिर ये ग्रेजुअली ये काम होता जाता है. जैसे अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट गोइंग थ्रू मार्केटिंग रिसर्च वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती, इसलिए ट्रेनिंग लॉन्च करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करना शुरू हो गई हैं. और अब विदाउट गोइंग थ्रू कंडक्टिंग दिस TNA, नो ऑर्गेनाइजेशन वुड बी लॉन्चिंग एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम. TNA is unnecessary because available information already specify organization needs. So managers believe that they have already available information, so there is no need to conduct any training need analysis. So they know that where the problem lies, whether it's with production department or it's with sales and distribution department. So because they say that they already know the problem, so there is no need to conduct this analysis. Then there is, we can see that another reason for not conducting the TNA is lack of support. So organization, a particular organization may have lesser support from top management for this training need analysis process. अच्छा, TNA कहाँ पे नहीं करना, ठीक है ना. TNA is not needed if organization is trying to communicate a new vision or it's going to address a legal concern that is organization wide. So अगर organization में उन्होंने कोई नई चीज़ implement करनी है, कोई नया सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, ठीक है, कोई नया डेटाबेस, कोई नया HRI का सिस्टम, ठीक है, तो उसके लिए क्या लाजमी नहीं है कि वो TNA करे, बिकॉज नाउ दे नो दैट एम्प्लॉइज वुड बी रिक्वायर्ड टू यूज दिस ट्रेनिंग, would be required to use this new program, या वहाँ पे workplace harassment के rules apply करने हैं. So because all of employees are required to train on those practices or on those laws or on that program, so each and every employee should be sent on training. So no need to conduct training if there is an organization wide change. और फिर if a team requires team building skills, तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं certain teams, तो उनके लिए फिर वो ज़रूरी नहीं कि उनके लिए आप individual analysis भी करें, simply send that entire team on any training session. So TNA कब नहीं करना है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन वाइड को चेंज कर रहे हैं या आपको पता चले ये टीम्स इनका प्रॉब्लम है, तो उन पर्टिकुलर टीम्स को आप ट्रेनिंग पे सेंड कर सकते हैं. Then we have to discuss here what is a training or HRD need. Actually ये है क्या? So a need is a discrepancy or gap between what an organization expects
टू हैपन एंड व्हाट एक्चुअली अकर्स। तो उसका एक्चुअली डिजायर्ड स्टेट क्या है और उसके एक्चुअल स्टेट क्या है, इसमें जो डिस्क्रिपेंसी, जो गैप है, दैट्स कॉल्ड नीड, और इसे हम कहते हैं दिस इज परफॉर्मेंस नीड, ठीक है ना। अच्छा, या डेफिशिएंसी नीड हम इसे कहते हैं। वेल, आइडेंटिफाइड नीड्स फोकस ऑन करेक्टिंग सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो जब हमने आइडेंटिफाई कर ली नीड ना कि जी इस डिपार्टमेंट में इतना प्रोडक्शन का लेवल, विद इन अ डे अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय शुड प्रोड्यूस 100 प्रोडक्ट्स, तो अगर उससे कम है तो इट मीन देयर इज अ गैप, डिस्क्रिपेंसी है। तो फिर एचआरडी इंटरवेंशन क्या करेगा, आइडेंटिफाई नीड्स, identified needs focus on correcting substandard performance. So after we have identified the needs, so we can correct substandard performance. Here HRD intervention may be the solution. ये भी हो सकता है कि HRD solution हमें चाहिए, कोई ट्रेनिंग चाहिए, ये solution हो सकता है। ये भी हो सकता है there are certain mismatch between compensation practices and the way you are going to see their performance. So compensation may be some of the solution. Another management action, it may be the change in situation, change in working conditions, or work rules may be the situation. We are going to discuss all of these options later on. सो नीड एक तो हमने यहाँ पे कहा, फिर सिंपल ये परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी पे अगर फोकस करना, नीड को देखना इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी, सो इट इज रेस्ट्रिक्टिव, देयर आर सर्टेन अदर डेफिनेशंस ऑफ नीड्स एज वेल। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस डायग्नोस्टिक नीड्स, एनालिटिक नीड्स एंड कंप्लायंस नीड्स। सो व्हाट आर दोस नीड्स? Well, diagnostic needs focus on factors that lead to effective performance and prevent performance problems rather than emphasizing existing problems. तो जो आपकी है ना परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी, जिसे हम पहले हमने नीड डिस्कस किया, वो करंट परफॉर्मेंस पे फोकस करती है। ये डायग्नोस्टिक नीड्स ये उन फैक्टर्स को काउंट करती है, उन फैक्टर्स को दैट लीड टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस, कि क्या इसमें मोटिवेशन चाहिए, इसमें वर्क रूल्स कहाँ पे फिट होते हैं, इसमें कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर का या रिपोर्टिंग का प्रॉब्लम या इक्विपमेंट का, so सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं एंड प्रिवेंट परफॉर्मेंस प्रॉब्लम rather than emphasizing existing problem. तो existing problem simply ये diagnostic needs identify नहीं करना, it identifies certain problems that we can foresee, that we can anticipate, कि अब अगर ये चेंज आ रही है तो इसमें ये प्रॉब्लम, तो हम डायग्नोज कर सकते हैं सर्टन प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन दिस डायग्नोस्टिक एनालिसिस। देन एनालिटिक नीड्स है जी, इट आइडेंटिफाई न्यू आर बेटर वेज टू डू थिंग्स। तो हम कुछ चीज़ों को एनालाइज पे कर सकते हैं कि ये तो इस तरह हो रहा है, तो हम कैसे करें कि चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। So it may be change in policies, change in work rules, change in equipment, change in something else. So analytical needs would also be considered regarding this TNA. Then there are certain compliance needs. So these are mandated by law or certain regulatory bodies कि आपने इन चीज़ों को follow करना। For example, law may require that you have to send training on, you have to send your employees on certain safety training, ठीक है ना। फॉर माइनिंग वर्कर्स हैं या इस तरह कोई और वर्क हैजर्डस वर्क प्लेस पे जो काम करते हैं, मशीनरी पे काम करते हैं, या अपना इलेक्ट्रिसिटी वायर्स पे काम कर सकते, तो उनके लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है। सो वो तो हमने करनी है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रेनिंग जो TNA ना, इट्स ऑफ टू टाइप्स, वन इज रिएक्टिव TNA, अनदर इज प्रोएक्टिव TNA. Well, reactive TNA would be simply reacting to a certain performance problem. So it would include when we would be focusing on certain performance needs and compliance needs. और proactive TNA क्या है जी, when we are going to foresee the problems, कि हमने फ्यूचर में ये चीज़ करनी है, ये हम नया प्रोग्राम, नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, या स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं। सो करंटली व्हाट आर द स्किल्स पोजेस्ड बाय आवर एम्प्लॉयज एंड व्हाट वुड बी द फ्यूचर स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑन दैट टेक्नोलॉजी आर ऑन दैट डेटाबेस। तो इसमें जो गैप है वो जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज थ्रू प्रोएक्टिव TNA अप्रोच। सो इट वुड एड्रेस आवर डायग्नोस्टिक एंड एनालिटिक नीड्स। सो दिस वाज समथिंग अबाउट HRDR ट्रेनिंग नीड्स. So how we can avoid this certain traps within this needs assessment? So if we focus only on individual performance, so अगर हम सिर्फ individual performance पे focus करेंगे, so we may fall trapped हम हो जाएंगे। तो हमने फिर देखना है कि ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी देखना है और डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को भी देखना है।
Then if we start with the training need assessment only, ठीक है ना, at times it may be evident that there is no training need assessment is required. जैसे हमने पहले कहा, अगर ऑर्गेनाइजेशन वाइड हमारे पास कोई ऐसी चेंज है तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग नीड असेसमेंट नहीं चाहिए. सो वाई टू गो फॉर TNA इन दैट सिचुएशन, या हमें पूरी टीम के लिए चाहिए ना ट्रेनिंग, तो सारी टीम को सेंड करते. वेल यूज इफ वी यूज सर्टन ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट आस्किंग पीपल व्हाट दे नीड, सो इट मे एक्चुअली sent us into hot waters, because people would be giving very varied and diversified responses, and it would be very difficult for us to interpret all of those responses. Then if we use only subjective data, उनसे opinions लेना शुरू कर दें, so opinions से लेके हम हो सकते certain जो relevant चीज़ें हैं वो हम miss कर दें. And if we are going to use only objective data, performance measure simple हम लेने, तो so इसमें भी हम हो सकता है कि कुछ गलत assess करके बैठे हों. So here if we focus only on objective data, certain performance indicators हम करते हैं, so we may take easily measured data, ठीक है ना, जो easily measured data उससे हम ले लेंगे, but critical hard to measure data would be missing. So these are certain traps that need to be avoided while we are going to conduct this needs assessment. TNA मॉडल देखें जी. Well, this is TNA model. It comprises of 3 stages: inputs, processes and outputs. Well, this TNA जो model है, it needs to be initiated the moment we feel certain trigger. यहाँ पे कोई ट्रिगर आपको नजर आएगा, then we would be conducting any training. और ट्रिगर क्या है जी? It's actual organizational performance. If actual organizational performance is lesser than expected organizational performance, तो अगर आपकी performance less है, so it needs that there is a need for TNA. Performance is less, so TNA is needed. So TNA मॉडल में क्या है? फिर 3 चीजें हैं: इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट्स. इनपुट्स में वी हैव टू कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस. Here we would see objective resources environment. ऑपरेशनल एनालिसिस में हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है, और पर्सन एनालिसिस में हम देखें उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है. देन प्रोसेसेस में वी वुड बी आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस डिस्क्रिपेंसी, ठीक है ना. हेयर वी वुड बी आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस गैप, और परफॉर्मेंस गैप आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चलेगा वेदर इट द सोल्यूशन इज ट्रेनिंग नीड और देयर इज अ नॉन ट्रेनिंग नीड सोल्यूशन. अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन दिस परफॉर्मेंस डिस्क्रिपेंसी, ये भी परफॉर्मेंस गैप है और ये भी परफॉर्मेंस गैप है. उसमें डिफरेंस क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे है. क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे. इसका लेवल क्या? ऑर्गेनाइजेशनल. और इसका लेवल है जी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, individual employee level पे. So this is our model for TNA. We are to discuss here this model. So starting with this training need analysis, here we have said that it includes 3 things: inputs, processes and outputs. Input would be including certain strategic or organizational analysis. So what is to be done within this analysis? It is the examination of an organization's strategy, goals and objectives. उसके strategy, goals और objective analysis and the systems and practices in place to determine how they affect employee performance. Organization की strategy, goals, उसके objectives और systems and practices that are in place to determine how they affect employee performance. So organization का structure, organization के अंदर reporting relationships, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन के रिवॉर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना. सो हियर वी कैन सी दैट वेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग इज नीडेड एंड अंडर व्हाट कंडीशंस इट विल अकर. ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में 2 चीजें बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहाँ पे हमने ट्रेनिंग करनी है, वेदर इट वुड बी conducted for production department, conducted for certain technical employees, conducted for maintenance repair department. किसके लिए हमने करनी है ट्रेनिंग,
एंड अंडर व्हाट कंडीशन, तो ये भी हमें ये ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस पाएगा। नेक्स्ट इज टास्क एनालिसिस, सो दिस इज एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स टू डिटरमिन द रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द टास्क रिक्वायर्ड टू बी डन। तो टास्क कौन से परफॉर्म करने हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे होगा। एंड KSAs रिक्वायर्ड टू गेट द जॉब डन, तो टास्क और KSAs, उनके लिए KSAs कौन से चाहिए, ये हमारा टास्क एनालिसिस करेगा। इसमें थर्ड लेवल ये पर्सन एनालिसिस, सो दिस इज एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन द जॉब्स टू डिटरमिन वेदर दे हैव द रिक्वायर्ड केसेस टू परफॉर्म एट द एक्सपेक्टेड लेवल। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जी ये पर्सन है, उसने ये जॉब करनी है, ठीक है, टास्क एनालिसिस जिस जॉब का एनालिसिस किया ना, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने इस जॉब करनी, तो वहाँ पे हमने टास्क भी आइडेंटिफाई किया है, केसेस भी आइडेंटिफाई किया। तो अब हमने यहाँ पे पर्सन को फोकस करना है कि जी वेदर दिस पर्सन हैव द रिक्वायर्ड केसेस टू परफॉर्म एट द एक्सपेक्टेड लेवल। तो हमने इस पर्सन के केसेस देखने हैं कि जी इसके केसेस हैं उस जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के क्या नहीं। सो हेयर वी वुड बी आइडेंटिफाइंग दैट हु नीड्स टू बी ट्रेन्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग दे नीड। अब इस बेस पे एम्प्लॉयज का एनालिसिस के बेस पे हमें पता चलेगा किसके पास रिक्वायर्ड केसेस हैं और किसके पास नहीं हैं। सो in this way we would be able to identify the participants and identify the areas in which we would be training them. Then उसके सेकंड है जी, एक हमने इनपुट से अगली सेकंड उसकी प्रोसेसेस है। अच्छा, प्रोसेसेस फेज में हमने क्या करना है कि जी जो टास्क एनालिसिस है ना, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कि जी ये टास्क क्या है और ये किस लेवल पे होने चाहिए। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी जी, टास्क एनालिसिस से आएगी। ये आपके प्रोसेस फेज में टास्क एनालिसिस आपको बताएगा जी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस ये प्रोसेसेस लेवल में एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन एनालिसिस, ठीक है ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। तो इसका जो गैप है, ठीक है ना, आपकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो क्या है, दिस वुड बी गैप। इफ इट इज पॉजिटिव देन यू आर रिक्वायर्ड टू सेट दैट पर्सन ऑन ट्रेनिंग। Then third part of this TNA is outputs. So outputs would tell us whether there is certain training need or there is certain non-training needs. So training needs would be addressed in some future lectures. For the current lecture we would be discussing certain non-training needs. In next lecture we would be discussing this non-training needs, and in certain future lectures where we would be discussing design of trainings or delivery of training, so we would be discussing all of these training needs. So this was something about TNA analysis. Now we are going to discuss this organization analysis. So organization analysis actually ties your HRD programs to organizational goals, and it strengthens corporate support for HRD. So it's actually two-way. So first HRD program would tie, ठीक है ना, ये HRD प्रोग्राम को टाई करेगा किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ, ये इसको टाई करेगा। और दूसरा व्हेन इट्स एबल टू शो इट्स परफॉर्मेंस, सो दिस वुड बी एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेट सपोर्ट, ठीक है ना। एक तरफ ये कह लें कि इसको गिविंग हैंड है इसका इन टर्म्स ऑफ HRD प्रोग्राम्स टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है ना, tying HRD programs to organization goals. It's showing that how HRD programs are would contribute to the achievement of organization goals. ये इसने कर दिया by showing the link. Then ultimately it's going to receive certain support. So it strengthens, ठीक है ना। तो ये अब require करेगा support from HRD. एक दफा ये कह ले कि certain चीजें दे रहा है organization in terms of showing that this HRD program is actually in support of organizational goals. फिर जब पता चले organizational goals में HRD का एक रोल है, फिर इस ये कह ले कि corporate support जो organization की corporate support है, फिर वो HRD department के लिए वापस आएगी, reverse में आएगी। This organizational analysis requires a whole system view. आपने पूरा एक सिस्टम व्यू लेना है ऑर्गेनाइजेशन का, सिंपल आपने बिट्स एंड पीसेस में या डिपार्टमेंट्स में या इंडिविजुअल टीम्स के लेवल पे एनालिसिस नहीं करना।
and we are to have an overall whole system view, and we are to see that what it is trying to achieve, कि इसकी overall objective क्या है, and how in what ways this HRD department can help or can support this organizational achievement of organizational objectives. Here what are the components of organizational analysis, ठीक है ना. सो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस कंपोनेंट्स क्या है, इसमें हम डिस्कस करेंगे जी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, ये चेक करने हैं जी. देन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, उसमें उसके कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और क्लाइमेट क्या है, और उसके एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स क्या है. ये इसके डिफरेंट एरियाज दैट नीड्स टू बी डिस्कस. और अब कह लें कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस है, इसको हम कह लें कि दो फेजेस में डिस्कस करेंगे. एक में इसके हम देखेंगे कि व्हाट आर द डाटा सोर्सेज, ठीक है ना. डाटा सोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस के लिए क्या है, देखें जी. डाटा सोर्सेज हम डिस्कस करेंगे. ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में हम दो चीजें करेंगे, डाटा सोर्सेज कहाँ से लेने हैं, और हम what to ask, what are the questions to be asked, and from whom we would be asking these questions. So organization analysis would be discussed on these two lines, data sources और किन क्या questions पूछने हैं और किन से पूछने, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अच्छा, data sources can be organizational goals, ठीक है ना. तो ऑर्गेनाइजेशन गोल से हमने क्या लेके डाटा लेना है इन ऑर्डर टू असेस दिस नीड ट्रेनिंग नीड्स एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल. सो हेयर ट्रेनिंग, ये फर्स्ट कॉलम हमें शो करता है डाटा सोर्सेज दैट आर रिकमेंडेड, सेकंड कॉलम शो करता है ट्रेनिंग नीड इम्प्लीकेशन, और थर्ड में हम वी आर गोइंग टू गिव सर्टन एग्जांपल्स. सो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, इसकी ट्रेनिंग नीड इम्प्लीकेशन क्या है जी, वेयर ट्रेनिंग एम्फेसिस कैन एंड शुड बी प्लेस्ड. सो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हमें बताएगा कि हमने कहाँ पे ट्रेन करना है. तो अगर गोल्स उसके प्रोडक्टिविटी है तो हम प्रोडक्टिविटी फोकस करें, अगर गोल्स क्वालिटी है तो क्वालिटी फोकस, अगर गोल्स उसके कह लें कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है तो न्यू प्रोडक्ट पे हम, अगर गोल्स कस्टमर सर्विस हो तो हम फोकस कस्टमर सर्विस पे करेंगे, ठीक है ना. हेयर वी कैन ऑल्सो यूज दीज ऑब्जेक्टिव्स भी यूज कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के बजट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना. अब इसकी एग्जांपल क्या है जी, टू मेंटेन अ क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ नो मोर देन 1 रिजेक्ट पर 1000. तो हमारा फोकस क्या है जी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो हमने कहा है कि जी हम किस लेवल तक जाएंगे जी, देयर शुड बी लेस नो मोर देन 1 रिजेक्ट पर 1000. एक अलाउ करते हैं हम 1000 प्रोडक्ट्स में एक अलाउ करते हैं दैट कैन बी रिजेक्टेड, उससे ज्यादा नहीं. अच्छा, हियर गोल इज टू बिकम ISO 9000 सर्टिफाइड एंड $90,000 हैव बीन एलोकेटेड टू दिस एफर्ट. और उसमें बजट भी उसने बना लिया है, ठीक है. अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशनल, यहाँ पे हम गोल्स डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स और बजट्स, और इसमें हम देखते हैं कि जी बजट हमें क्या अलाउ करता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमें क्या अलाउ करते हैं. सो अवेलेबिलिटी ऑफ बजट वुड आल्सो लेट अस नो दैट व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वी कैन अरेंज और व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वी कैन प्रोक्योर. और हमारा जो एनालिसिस है, ठीक है ना, बजट वाला, ये भी हमें बताएगा कि हम इसमें कितने एक्सपेंडिचर लगा सकते हैं और कितनी देर तक हम इस सारे सिस्टम को सस्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट डाटा सोर्स जो है दैट इज लेबर इन्वेंट्री. लेबर इन्वेंट्री मीन्स ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्सेज. सो here we can know that where training is needed to fill gaps caused by retirement, turnover or age. So if we see that a substantial amount of amount of employees in a particular department, they are leaving, are going to be retired, so we are to be prepared. अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है जी, 30% of our truck drivers will retire over the next 4 years. तो हमने अब उसके लिए ट्रेन करने हैं अपने एम्प्लॉइज. एक पर्टिकुलर कोई भी ट्रेड, कोई भी कैडर हो सकता है, इसमें सीनियर मैनेजर्स हो सकते हैं, आपके फैक्ट्री मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हो सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर. सो वी आर टू सी दिस लेबर इन्वेंट्री, दैट इज देयर एनी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द रिटायरमेंट और टर्नओवर और एज प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉइज. लेबर इन्वेंट्री एक सोर्स हो गया. नेक्स्ट डाटा सोर्सेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में जी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इंडिसेस हैं. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट हमने चेक करना है. इसमें
क्या जी these may help focus on problems that have training components. हम उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं जो जहाँ पे हम कुछ ट्रेन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक क्लाइमेट में हमें सारी चीज़ें नहीं करनी। ऑर्गेनिक क्लाइमेट में डस्ट भी आ जाएगा, नॉइज़ भी आ जाएगा, कल्चर भी आ जाएगा, तो सारी चीज़ों पे हम किस पे फोकस करने हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग का हमारे पास कोई पोटेंशियल हो। ग्रीवेंसेस पे फोकस कर लें, एब्सेंटिज्म पे फोकस कर लें, एक्सीडेंट पे फोकस कर लें। सो ग्रीवेंसेस में here we can see that items related to productivity are useful in determining performance deficiencies. ठीक है ना, ग्रीवेंसेस में हम क्या करेंगे, आइटम दैट आर रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी एंड आर यूजफुल इन डिटरमिनिंग परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्रीवेंसेस प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है एंड दे आर यूजफुल इन डिटरमिनिंग परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी, और उससे हम परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी भी कर सकते हैं और इसमें हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं। सो व्हाट आर द एग्जांपल? 70% ऑफ ग्रीवेंसेस आर रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ 6 सुपरवाइजर। तो हमें पता है ये 6 सुपरवाइजर ये प्रॉब्लम करते हैं, तो उनकी जो सर्टन पीपल स्किल्स है या एम्प्लॉय हैंडलिंग स्किल्स है उनको हमने ट्रेन करना है। अच्छा, अब एब्सेंटिज्म आप चेक कर लें। सो हाई एब्सेंसेस इन क्लरिकल स्टाफ, तो हमें इससे पता है कि क्लरिकल स्टाफ इज प्रोड्यूसिंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक्सीडेंट चेक कर लें जी। एक्सीडेंट रेट फॉर लाइन वर्कर्स इज इंक्रीजिंग, तो जो लाइन वर्कर्स हैं असम्बली लाइन पे काम कर रहे हैं उनका एक्सीडेंट रेट ज़्यादा है। सो वी आर रिक्वायर्ड टू ट्रेन दीज लाइन वर्कर्स ऑन सर्टन सेफ्टी मेजर्स। अच्छा, डाटा सोर्सेज में व्हाट आर नेक्स्ट? Here we can see certain analysis of efficiency indices. एफिशिएंसी के इंडिसेस आप चेक करें, वो भी आपके लिए से हो सकता है। इसमें कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, टेक्निकल एफिशिएंसी होती है, रेवेन्यू एफिशिएंसी है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज हैं। तो इसमें आप ट्रेनिंग नीड इम्प्लीकेशंस क्या हैं जी? इट कैन हेल्प डॉक्यूमेंट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। तो एफिशिएंसी आपको बताएगा कि जी आपकी एफिशिएंसी कितनी है आपके प्लांट की या आपके डिपार्टमेंट की या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, और एफिशिएंसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। सो इट कैन हेल्प डॉक्यूमेंट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। इसमें एक एग्जांपल हो सकती है जी कॉस्ट ऑफ लेबर। तो आप चेक करें कि जी योर लेबर कॉस्ट हैज़ इंक्रीज्ड 8% इन द लास्ट ईयर। तो आपकी लेबर कॉस्ट 8% इंक्रीज हो गई है। सो व्हाट इज द सिचुएशन इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुई है। अच्छा, आप चेक करें जी अनदर डाटा सोर्स क्या हो सकता है, चेंजेस इन सिस्टम और सब सिस्टम। कोई भी जो आपका सिस्टम उसमें चेंज हो सकती है या सब सिस्टम में चेंज हो सकती है। ट्रेनिंग नीड इम्प्लीकेशन क्या है जी? न्यू आर चेंज इक्विपमेंट में प्रेजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आपने कहीं पे इक्विपमेंट चेंज किया है, कहीं पे कोई सर्टन गेज चेंज हुई है, कहीं पे सर्टन किसी चीज़ के मीटर चेंज हुए, कहीं पे यूनिट चेंज हुए, कहीं पे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो उसके लिए फिर आपको पता चल जाएगी ट्रेनिंग चाहिए। सो हियर वी कैन सी दैट एग्जांपल क्या है जी? द लाइन हैज़ बीन शट डाउन अबाउट वंस पर डे since the new machinery was installed. So waste has doubled since using the new cutting tool. तो आप देखें कि नई मशीनरी इंस्टॉल करने से प्रॉब्लम हुआ है और न्यू कटिंग टूल इंस्टॉल करने से प्रॉब्लम। सो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट योर ट्रेनिंग ऑन दोज एरियाज। So this was something about data sources. Now we are going to discuss at second level that what do you ask and from whom you would ask these questions. अब हम देख रहे हैं कि आप क्या पूछेंगे और किन से पूछेंगे, ठीक है, और कौन से एरियाज हैं। Here well this slide shows that in this right hand side column there are what to ask about, क्या पूछना है। It shows who to ask, ठीक है ना, from whom we would be asking these information. प्रीवियस स्लाइड में हमने डाटा सोर्सेज डिस्कस किए, ठीक है ना, कहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग इम्प्लीकेशंस क्या थी और उसकी एग्जांपल्स क्या थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट क्वेश्चंस वी कैन आस्क, ठीक है, एंड फ्रॉम होम वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस। सो हियर वी कैन डिस्कस अलोंग वेरियस लाइंस। सो फर्स्ट वन इज मिशन, goals and objectives. Second is social influences. So regarding this missions, goals and objectives,
we can ask certain question. First question may be, what are the goals and objectives of the organization? Organization के goals और objectives क्या हैं, ठीक है ना? And from where we can ask this question? From top management, ठीक है? टॉप मैनेजमेंट पे हम पूछ सकते हैं, या ये हम अपनी सर्टन बुक्स या क्वालिटी पॉलिसी उसमें भी देख सकते हैं, मीटिंग या बोर्ड रूम में डिस्प्ले होती हैं ये चीज़ें, वहाँ से देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, हाउ मच मनी हैज़ बिन एलोकेटेड टू एनी न्यू इनिशिएटिव? कितना हमने इस पे लगा दिया है? हाउ मच मनी हैज़ बिन एलोकेटेड टू एनी न्यू इनिशिएटिव. तो ये क्या एक और इंफॉर्मेशन होगी, कितनी हमने बजट लगाया किसी भी नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर. सो फ्रॉम वेयर वी कैन आस्क दिस? फ्रॉम रेलेवेंट डिपार्टमेंट. सो इट कैन बी आस्क फ्रॉम HRD मैनेजर, ठीक है ना, या पर्टिकुलर HRD एग्जेक्टिव से पूछ सकते हैं. देन वी कैन आस्क दैट इज देयर एनी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स, के उसकी प्रॉपर परसेप्शन क्या और उन गोल्स की जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है. व्हाट इज मेंट बाय क्वालिटी और सर्विंग द कस्टमर राइट द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, इसके क्या मीनिंग क्या है, ठीक है ना. हाउ टू कट डाउन आवर सप्लाई चेन टाइम, तो इसकी क्या मीनिंग है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं. सो वी कैन आस्क सर्टन क्वेश्चन दैट इज देयर एनी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स, इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या. सो वी कैन आस्क फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट दिस क्वेश्चन की जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज objectives, and if objectives are pertinent to a particular department, then we can ask from relevant departmental managers. Then next issue, next area where we can ask certain question is social influences. आपकी organization के कुछ social influences होते हैं, तो उसमें हम कौन से questions पूछ सकते हैं. So here we can ask, what is the general feeling in the organization regarding meeting goals and objectives. तो organization employees इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि to achieve organization goals and objectives. So how much they are concerned with the achievement of these goals and objectives, whether they take it very seriously or they take it casually. क्या वो हमेशा उस चीज़ पे फोकस करना शुरू हो जाते हैं कि to achieve those goals, or they may simply relax. तो उनके कैसा एटीट्यूड क्या है, उनका बिहेवियर क्या है विद दिस सर्टन इशू, के लोगों की जनरल परसेप्शन क्या है गोल अचीव करने में, और लोगों की जनरल परसेप्शन क्या है. सो दिस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, फ्रॉम रेलेवेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरवाइजर्स एंड इवन इनकम्बेंट्स. इनकम्बेंट्स वो एम्प्लॉयज जो उस पर्टिकुलर जॉब पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे काम करते हैं. तो हमने पूछना है कि जी हाउ डू यू एक्चुअली परसीव और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो आपकी जनरल परसेप्शन क्या है, हाउ यू डू यू अप्रेज दिस particular area achievement of organizational objectives. Next question we can ask within the social influence is, what is the social pressure in your department regarding these goals and productivity. So social pressure क्या है, इसमें social pressure we can take the example from peers, how peers actually stress on the achievement of those goals, ठीक है, और what do they say about productivity, that if organization has set a goal to produce or to sell its products within a day at a particular level. So how actually what is the social pressure or what is the culture or environment within this organization regarding achievement of those goals. तो क्या उसमें हमेशा ही होता है कि आपने हर हाल में गोल अचीव करना है, या प्रोडक्टिविटी हर हाल में शो करनी है, या if how much you should be concerned with productivity, how much you should be concerned with quality. So how to actually make a balance between quality and quantity. This can be resolved by seeing the social pressure. तो जितना ज़्यादा social pressure होगा achievement of objectives या productivity पे, उतना लोग forego करें, ignore करेंगे quality of product को, और जितना ज़्यादा उसमें social pressure कम होगा productivity पे, it means that now this organization encourages to go for
क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो क्वालिटी पे फोकस ज़्यादा करते हैं। तो सोशल प्रेशर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो डिटरमिन करता है कि जी आप कैसे ये डिफरेंट इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करेंगे। इफ देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, सो हाउ डू यू गो फॉर दिस वुड बी रिजॉल्व्ड बाय सोशल प्रेशर दैट इज प्रेजेंट विद इन दैट डिपार्टमेंट और विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। Here we can check this social pressure from relevant departmental manager। जिस डिपार्टमेंट के लिए करना है उसके डिपार्टमेंटल मैनेजर से करें, वो सुपरवाइजर उस डिपार्टमेंट में जो है उनसे करें, और जो लोग वहाँ पे प्रेजेंटली जॉब्स कर रहे हैं इनकम्बेंट्स जो हैं उनसे आप ये चीज़ें पूछें। नेक्स्ट जी, व्हाट टू आस्क एंड हु टू आस्क। Here we can discuss certain reward system, ठीक है। तो ये भी important है regarding organizational analysis, because if there is an inconsistency or mismatch between performance appraisal, ये performance कैसे check होती है और इसके rewards कैसे हैं, जैसे ही उसमें कोई mismatch आया, so it's not possible to enhance the performance of employees. Employees would be performing in the way their performance is being judged। हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने HRM के पोर्शन में डिस्कस की थी ना परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो यहाँ पे ये है कि आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे बनाई हुई है और आपके रिवार्ड्स कैसे आपने उसमें इम्प्लीमेंट किए हुए। सो देयर शुड बी अ वेरी क्लोज मैच बिटवीन योर परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड योर रिवार्ड सिस्टम। तो इसमें बड़ा क्लोज मैच होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें अलाइनमेंट होनी चाहिए। जहाँ पे भी आप देखें कि आउट ऑफ बैलेंस है, आउट ऑफ सिंक है, सो यू हैव टू एक्चुअली गो फॉर रीअलाइनमेंट और सिंक्रोनाइजेशन। वेल हाँ, यहाँ पे हम क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, व्हाट आर द रिवॉर्ड्स एंड हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। तो हमने कहना है कि रिवॉर्ड्स क्या हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमें पता है कि जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवॉर्ड्स क्या है और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो हेयर वी कैन एक्चुअली डायग्नोज एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया that we use, that organization uses in order to check their performance, and the reward system that they have in place। और फिर हम उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में उसे जितना मर्जी ट्रेन करो, उस एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जितना मर्जी ट्रेन करें, until unless we actually change the reward system, we won't be we won't be able to see any performance improvement। तो उनकी परफॉर्मेंस उस वक्त तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक हम उसका रिवॉर्ड सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे। रिगार्डिंग रिवॉर्ड सिस्टम वी कैन फर्दर आस्क दैट आर देयर एनी इंसेंटिव्स, क्या इंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, ये होते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है ना। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, टीम परफॉर्मेंस पे या ऑर्गेनाइजेशन वाइड परफॉर्मेंस से सर्टेन इंसेंटिव्स होते हैं। So we have to ask that whether do you have any incentives for employees and how they are tied to the goals and objectives। So important क्या है जी, incentives हैं और अगर हैं तो कैसे लिंक करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स के साथ। This is very important। Until unless we remove this inefficiency or we remove this inconsistency, we won't be able to see any performance improvement। Next we can ask that what specifically do high performers get as rewards। तो हम ये उनसे पूछेंगे कि जी रिवॉर्ड्स क्या मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, जो हाई परफॉर्मेंस शो करते हैं उनको रिवॉर्ड्स क्या मिलते हैं। सो दिस कैन बी these can be few questions that we can ask regarding reward system in order to make it aligned with the organizational objectives। So until unless we have a thorough analysis of reward system, of compensation practices, उसके benefits क्या हैं, उसके incentives क्या हैं, उसके bonuses कैसे determine होते हैं, कौन कौन से उनको incentives हैं और benefits हैं, जब तक हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता और कैसे ये determine होते हैं, जब तक हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता, we won't be able to design any training program that would be effective। हम उनको ट्रेन करते जाएंगे कि how to go for customer service,
क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे करनी है. बट इफ until unless we improve this reward system we cannot expect any change in their behavior. वो हो सकता है वो सीख जाएं लेकिन वो अप्लाई नहीं करेंगे. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जी जो परफॉर्मेंस मॉडल में कि परफॉर्मेंस ऑफ अ टिपिकल एम्प्लॉय इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन और अ फंक्शन ऑफ SRR, KSAs, motivation and environment. So we are to actually check the environment. There is no problem with the motivation of employee with KSAs, but there is a problem with the environment. So environment में क्या है, उसके rewards हैं. हमने उसकी performance appraisal एक तरह से करनी है, ठीक है, और हम rewards किसी और तरह से दे रहे हैं. So there should be a match between the way we are going to praise their performance and the way we have actually set their rewards or incentives. तो incentive और rewards में एक कंप्लीट मैच होना चाहिए, बहुत एक क्लोज मैच होना चाहिए. तो जब तक वो मैच नहीं होगा वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी लर्निंग दैट इज ट्रांसफर टू द जॉब. तो जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वो नहीं होगा until unless we improve any inconsistency within environment. अच्छा, हम फिर ये क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे? टॉप मैनेजमेंट से पूछेंगे ये क्वेश्चन, रेलेवेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर से, सुपरवाइजर और इनकम्बेंट से. तो हम टॉप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं रिवार्ड्स के बारे में, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, HR मैनेजर या कंपनसेशन एनालिस्ट उनसे पूछ सकते हैं, HR एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हैं, और वो वाले लोग जो उस पर्टिकुलर जॉब में काम करते हैं, ठीक है ना, गोल्स और उनके इंसेंटिव बारे में उनसे भी पूछना है जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. अनदर एरिया रिगार्डिंग from where we can ask certain questions within organization analysis is job design, ठीक है ना. So here we can ask that how are the jobs organized, jobs organized कैसे हैं, ठीक है, आपस में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कैसे है, क्या वो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है, क्या प्रोसेस स्ट्रक्चर है, क्या मैट्रिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, किस किस्म का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है. Where does their work or material or information come from, where does it go when done. तो उसके वर्क फ्लो कैसे है, मटेरियल उसके लिए कहाँ से आता है, इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, और ये काम किस को रिपोर्ट होता है या किस को फर्दर सेंड किया जाता है. सो दिस ऑल इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक देम इफेक्टिव while on the training and while to make them or to enable them to apply the training while they have resumed their job. So transfer learning और learning दोनों के लिए job design important है. Then we can ask, does the design of the job inhibit workers from being high performance? क्या उस जो organization का design है वो ऐसा तो नहीं है कि वो लोगों की performance को restrict कर रहा हो, ठीक है. We have to check all of these information, we have to ask all of these questions regarding job design when we are going to conduct this organizational analysis. तो इसमें job design में हम सारी चीज़ें चेक करने के organization overall structure कैसे है, उसमें reporting कैसे होती है, उसमें division of labor कैसे है, उसमें कह लें कि आपकी सुपरविजन कैसे होती है, अथॉरिटी कैसे यूज़ होती है, अथॉरिटी डेलीगेट कैसे होती है, एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है, मटेरियल कैसे आता है आपके पास, और हाउ डू यू एक्चुअली रिपोर्ट एंड वेयर योर वर्क इज़ एक्चुअली रिसीव्ड. आपका नेक्स्ट जो है वो डिपार्टमेंट कौन सा, आपकी जो आउटपुट्स हैं वो कहाँ पे इनपुट्स हो जाती हैं. सो until unless we have all of these information available with us we cannot actually identify the performance gap within organization. तो ये जो हम performance gap find out कर रहे हैं इसके लिए हमने सारी चीज़ें एक्चुअली चेक करनी है, उसके सोशल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, उसके रिवार्ड सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन की जॉब डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें करनी है. अगेन जॉब डिज़ाइन हम किससे करें, क्वेश्चंस कहाँ से पूछेंगे, हम रेलेवेंट सुपरवाइजर से पूछ लेंगे कि जॉब कैसे डिज़ाइन होती है, इनकम्बेंट से, एंड perhaps we can ask from relevant departmental managers. Well, further areas or next areas regarding to ask questions, here we have area for job performance as well as methods and practices. So within job performance, the questions to be asked include how do employees know what level of performance is acceptable. So क्या उनके पास टारगेट्स हैं जो परफॉर्मेंस अप्रोच में डिस्कस किया था ना कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वो क्या है, टारगेट्स कहाँ पे है, क्या उनको पता है सारी चीज़ें या नहीं,
ठीक है. Then how do they find out if their level of performance is acceptable? फिर उनको कैसे पता चलता है कि क्या acceptable क्या है और required क्या है, standard क्या है और minimum क्या है, इनको कैसे पता चलता है? Whether there is a formal feedback process, तो feedback कैसे मिलती है, क्या जितने जो भी मैं काम करूं, if I am performing best, I am doing my job best, then how I would be receiving feedback. And if I am facing certain problems, with respect to productivity, with respect to quality of product, with respect to customer service, with respect to certain safety measures. So if there is a problem, then how I would be reported back. उसकी feedback कैसे आती है, ठीक है. Then another question we can ask that are there opportunities for help if required? तो क्या जब हेल्प है तो उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है. आई एम अनएबल टू परफॉर्म माई जॉब, आई एम लैगिंग बिहाइंड द सेट स्टैंडर्ड्स, सो कैन आई सीक any help from my colleagues or from my supervisor, or is there any alternate, or is there any procedure in place to help these needy people? So these are the questions that we can ask regarding the area, that is job performance. तो हमें we should be letting our employees know what is expected, उसका standard performance क्या है, उसका minimum performance क्या है, उसकी feedback कैसे होगी, कितना acceptable performance क्या है, और उसकी opportunities for help हैं कि नहीं है, so that they can perform their job well, and we can identify certain performance gaps, certain deficiencies, certain areas with respect to these organizational analysis. तो इसमें हो सकता है उनको communication नहीं है कि expected level क्या है, minimum level क्या है, उनको feedback का नहीं पता कहाँ से लेनी है, या feedback वो access नहीं करते, ठीक. कहीं पे भी communication का problem है, कहीं पे आप देख सकते हैं कि जो उनके पास कोई system है help का, but they don't know that how to seek for this help, ठीक है. कहीं पे ये मैनुअल्स हो सकते हैं, कहीं पे सिस्टम के ऊपर हेल्प होती है. सो इफ दे नो देन दे कैन यूज इट, एंड इफ दे डोंट नो देन हाउ दे वुड बी यूजिंग इट. Then from home we are to ask these questions. Obviously it is to be asked from relevant supervisors and incumbent. Job performance पे relevant supervisor और incumbent से हम questions पूछ सकते हैं. Then final area where we can actually ask certain questions in order to conduct this organizational analysis is methods and practices. कि organization के work methods क्या हैं और practices क्या हैं. Here we can ask question, what are the policies, procedures, rules in the organization? और तो organization की policies, procedure, rules क्या हैं? Here we can discuss these rules and regulations from different perspectives. So प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के या क्वालिटी के क्या रूल्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, प्रोडक्ट रिटर्न की क्या पॉलिसीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की क्या पॉलिसीज़ हैं, कस्टमर सर्विस की क्या पॉलिसीज़ हैं, आफ्टर सेल सर्विस की क्या पॉलिसीज़ हैं. सो डिफरेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट प्रोसीजर्स, कंपनसेशन क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, लीव के क्या रूल्स. इफ़ people know each and everything, then they would be satisfied and they would be performing. If there are policies are available but they don't know, so there is a problem. So we can actually design a training whereby we can let them know different policies, different rules and regulations, different work processes. उनको हम बताएंगे, ठीक है ना? So that by extending their access to different their knowledge, making them knowledgeable regarding different rules, regulation and procedure or practices, their morale would be high, their satisfaction would be high, and there would be contented workers and they would be contributing to a greater extent. And we can check that which, if any, inhibit performance, that if there is any rule, any procedure, any work method, any policy that inhibits performance. तो कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती हैं, कोई रूल्स जो उनकी परफॉर्मेंस को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, परफॉर्मेंस को inhibit कर रही हैं, परफॉर्मेंस को negatively affect कर रही हैं. So if we see this sort of situation, this sort of policy, then we should be simply removing that policy. So actually we are going to conduct this organizational analysis in order to know about performance gaps. हमने स्टार्ट में, लेक्चर के स्टार्ट में ये कहा था कि हमारा फोकस परफॉर्मेंस पे है, हमारा फोकस
इस चीज़ पे नहीं है, ट्रेनिंग पे। सो वी आर टू एक्चुअली इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सो इसका जो रिजल्ट है वो किसी भी सूरत में हो सकता है। हमने कहा ट्रेनिंग नीड भी हो सकते हैं, नॉन ट्रेनिंग नीड भी हो सकता है, तो इसका रिजल्ट किसी भी सूरत में हो सकता है। बट वी आर टू एक्चुअली प्रोसेस दिस मटेरियल, प्रोसेस दिस मेथड। ये TNA सारा हमने करना, असेसमेंट करनी है हमने, ये नहीं कि दरमियान में छोड़ देना या स्टार्ट ही नहीं करना। आफ्टर वी हैव completed this analysis, we would come to know that what is the problem and how this problem can be solved। तो ट्रेनिंग भी हो सकती है उसके लिए, नॉन ट्रेनिंग नीड भी हो सकती है। रिवार्ड को हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, हम पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, हम टूल्स को चेंज कर सकते हैं, हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को चेंज कर सकते हैं, हम कोई और उसमें जॉब बेड्स लगा सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है। अच्छा, मेथड्स ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं? वी कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेलेवेंट डिपार्टमेंट मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स एंड इनकम्बेंट्स। सो दिस वाज all about organization analysis. Here we have discussed organization analysis कि इसमें हमने करना है कि from where to get data, data sources कैसे हैं, कहाँ कौन कौन से data sources, and what do you ask and from whom you would ask। तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, 2 steps में हम डिस्कस किया organization analysis। So here we are going to give you the summary of lecture 21। Here we have discussed training need assessment, TNA model, that it's a systematic process where it would be going to identify the training needs of its employees in terms of current KSAs and in terms of KSAs that would be required to perform certain future jobs। तो current jobs perform करने में कौन से KSAs चाहिए और future job perform करने में कौन से KSAs चाहिए, this would be made known after this TNA। Then we have discussed why to conduct TNA, TNA हम क्यों करें, ठीक है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ों को पता चलता है कि कौन सी ट्रेनिंग हमने देनी है, किस एरिया में देनी है, किस एम्प्लॉय को देनी है, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ें हमें TNA एनालिसिस की वजह से पता चलती हैं। देन व्हाट इज़ आवर ट्रेनिंग, आवर HRD नीड। हेयर वी हैव डिस्कस्ड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड, परफॉर्मेंस नीड्स, here we have discussed diagnostic needs, analytic needs and compliance needs। Performance and compliance needs are actually we use these performance and compliance needs for our reactive TNA, where we are going to rectify certain existing problems। और जो future problems जो हम foresee करते हैं, where we use diagnostic and reactive needs, analytic, diagnostic and analytic needs। ये कहाँ पे हम use करते हैं, जहाँ पे हमने proactive TNA करना है। TNA मॉडल हमने डिस्कस किया, उसमें हमने कहा है कि जी इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इनपुट। ये TNA मॉडल में हमने कहा जी इनपुट्स हैं, प्रोसेसेस हैं और आउटपुट्स हैं। यहाँ पे हमने सिंपल इनपुट्स डिस्कस किए हैं और उसमें भी हमने डिस्कस किया सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस को डिस्कस करने के हम इसमें उसके चेक करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मिशन, स्ट्रेटजीज, गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, बजट डिस्कस करते हैं, HR डिस्कस करते हैं। बजट में हम देखते हैं कितनी हमारे पास मनी अवेलेबल है ट्रेनिंग के लिए, हम इस अवेलेबल रिसोर्सेज हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और फिर हम ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज में हम HR भी चेक करते हैं कि इन विच एरिया वी हैव trainer available within our department, within the organization, in which area we are to actually hire a trainer, select a trainer from the industry। अच्छा, इसमें हम फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के बजट, ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन के सर्टेन कंस्ट्रेंट्स हम डिस्कस करते हैं। डाटा सोर्सेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस ये हम डिस्कस किया, देयर आर डिफरेंट डाटा सोर्सेज अवेलेबल हैं एंड व्हाट डू यू आस्क एंड फ्रॉम होम टू आस्क। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, उसकी स्ट्रेटजीज, उसके मिशन, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन के सोशल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन के रिवॉर्ड सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन के जॉब डिज़ाइन पे और डिफरेंट एरियाज में हम डिस्कस किए क्वेश्चंस और ये भी देखा कि हम किन से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस वाज द समरी ऑफ लेक्चर 20। नाउ दीज आर द रेफरेंस बुक्स, इफेक्टिव ट्रेनिंग सिस्टम, स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिस। Another one is human resource development, foundation, framework and application। So these were the reference book. Now this was all about lecture 21. Thank you very much.